हाय गाइस, वेलकम बैक। जैसा कि आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे काउंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ रिकॉर्ड कलेक्शन वेरिएबल। सपोज आपके पास अकाउंट ऑब्जेक्ट है एंड इन अकाउंट ऑब्जेक्ट पे सपोज कोई एक अकाउंट आपने खोला, उस अकाउंट के अगेंस्ट कितने आपके कॉन्टैक्ट अटैच है आपके डिटेल पेज पे दिखना चाहिए। लाइक इस पेज पे आपको काउंट टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दिखने चाहिए कि हमारे हमारे पास कितने कॉन्टैक्ट्स उसके अगेंस्ट हमारे पास पड़े हुए हैं। हमें रिलेटेड अब टैब पर नहीं क्लिक करना है, हमें इसी पे पता चल रहा है कि हमारे पास कितना काउंट है, टोटल अकाउंट लिंक्ड है हमारे इस अकाउंट से। सो टू डू दिस, गो टू द सेटअप, click on flow, click on flow, click on this flow, click on new flow, start from scratch, click on next, select screen flow, create. So firstly the logic is you have to get the record which is account id equal to record id. तो सेट सबसे पहले हम रिकॉर्ड को गेट करेंगे जिसकी अकाउंट आईडी गेट रिकॉर्ड फ्रॉम अकाउंट sorry get record from contact. Okay, in this we have to get the record where whose account id is mapped to account contact. Okay, so contact, select contact. In this condition, set a condition where account id equals, create a new resource variable account underscore id text available for input, available for output. सो हमें एक वेरिएबल स्टोर में अकाउंट आईडी स्टोर के लिए जो कि इसमें मैच करेगा अकाउंट आईडी इक्वल्स अकाउंट आईडी, देन इट विल फेच द अकाउंट विच इज रिलेटेड टू दैट कॉन्टैक्ट। अभी डेमो देखो, ऑल रिकॉर्ड। ओके, सबसे पहला आपका स्टेप ये हो गया। देन वी क्रिएट वन असाइनमेंट रूल, count record. In this, create one variable like count underscore record, and in this count record we have to count record. I think same name count, sirf count. Then we have to use number variable because it will be used for the number. Okay, all for input, all for output. Decimal places no, we have to write is 0 10 equals count contact from get object record. Okay, so equal to contact from get object record. We have to this write this. Anything else, just remove this, and yeah, context from get out. Then after that select a screen flow that is display text, count this COUN record counts. Okay, what should I name? Display.
display screen. Okay, so write total record, and you have to mention the input resource, that is count. The counter can't be used as a merge field. Give me a second. Okay, so screen display, screen display. Let's remove the header. I don't want the header. Click on done. Save. Screen flow, count number of record, and activate this. After activating, click on detail page, edit page, and add your flow. Okay, flow. Okay, count screen flow, count number of record, and pass this account ID as well, that is pass record ID into this variable. Okay, just save this, activate this page, assign an org, desktop and phone. Next, save. Okay, just refresh this page, and you will see total record is 1. Okay, suppose you have add 1 record, then see it will be added or not. Sing, so save. Just refresh this page, you will see the total records will be 2, right? And okay, got it. Suppose you have to open another record. This is pyramid construction. Records will be 1, then total records will be in the detail page, the total records will be 1. So this is how you can count number of records in a record collection variable. This is how you can count the record. So I hope you will like this video. Please hit like and subscribe my channel, and if you have comments, please write out in the comment section. Thank you guys.